Am I audible, sir? Okay. Yes, audible. हाँ सर. Yes, carry on. जो हम डिस्कस कर रहे थे. हाँ सर, मतलब आपका क्या होता है, जो केमिकल शिफ्ट दैट इज के डेल्टा आर बाय आर साइन 1s स्क्वायर माइनस सी होता है. तो दैट मींस फॉर आयरन वी आर डिस्कसिंग फॉर आयरन, सो इट इज 3s2 3p sorry 4s2 3d6 and Fe2 पॉजिटिव के लिए 4s0 3d6 Fe3 positive 4s0 3d5 and whereas Fe plus 4 के लिए 4s0 3d4. Okay, so here only I am taking Fe plus 3. Okay, so here what it is there, you can see for delta iron delta R is basically negative. Okay, in tin delta R is positive, whereas for iron delta R is negative. So that's why if s electron density increase, then psi 1s decrease. Okay, s electron density is increased, then psi 1s will decrease. So therefore here you can see s electron is maximum, that means 2 s electron is there. So therefore iron has less chemical shift, delta Fe has the least. After that, what you can see, I have already told that d electron increase, then chemical shift decrease, whereas d electron increase, then chemical shift will d electron no sir, d electron increase से मतलब s इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, तो s इलेक्ट्रॉन डिक्रीज से यहाँ पे हम लोग क्या बोला, s इलेक्ट्रॉन इंक्रीज से केमिकल शिफ्ट डिक्रीज होगा. सो देयरफॉर इफ d इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो s इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, सो देयरफॉर केमिकल शिफ्ट बेसिकली इंक्रीज होगा. ओके, सो हियर यू कैन सी Fe2 positive there is 6d electron, whereas Fe3 positive there is 5d electron. So what you can say iron 2 positive has more chemical shift than iron 3 positive. Yes, so the order is Fe2 positive greater than Fe3 positive than Fe. Is it correct, sir? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Next is quarter pole interaction. Yeah, quarter pole moment. What is quarter pole interaction? So basically, those nuclei which quarter pole is splitting. Yes, sir. Those nuclei which has I value greater than half. Okay, then it can basically it has tends to show quadruple splitting. And if the electron field gradient, okay, if the electron field gradient is absent, okay, 0, then quadruple splitting will be also absent. Okay, only single line we will observe. Whereas if the electron field is present, that means electron field is not equal to 0, then quadruple splitting will be there, or there will be, we can get doublet also. Okay, so we can get doublet also. Basically, that means in present. Okay, so if in a complex, all the ligand, that means all the ligand are same, or if the complex are totally symmetrical or spherical, then there is no electron field gradient, and therefore there will be no quadruple splitting. Suppose I am taking FeCN6. Okay, FeCN6, that is 4 minus. Okay, FeCN6 4 minus. So here you can see all the ligand are same. So there is ligand that is symmetry. That is, there is symmetry of ligand. Whereas
you can see Fe2 positive is there. Okay, iron has the configuration of Fe2 positive, and it has that means what it is called. It has configuration of D6. So D6 means since cyanide is a strong field ligand, so all the electron will be paired in the T2G orbital. So configuration is T2G6. So here you can also see that there is also symmetry in the electron field configuration and also symmetry in the ligand. So therefore, it will not show quadruple splitting is absent, and it will show only single line. Okay, sir. It will show only single line. Whereas in Fe, suppose I am taking like FeCN6 3 minus. Okay, FeCN6 3 minus, then ligand is symmetrical, but the iron configuration will be Fe3 positive, and it would have the electronic configuration of D5. Then it will be also quadruple. That means quadruple splitting will be also absent, because electronic configuration is there is also symmetrical in nature. Yes, sir. Electrical configuration there is symmetrical in nature. Okay, sir. Okay. Suppose I am taking another example, that is iron का ही लेते हैं, तो उसका example suppose I am taking FeCl6 4 minus. Okay. Here ligand तो same ही है, so ligand तो symmetry होगा, but iron has the configuration of Fe2 positive. It is now D6, but here chlorine is strong field. Weak field. So therefore 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means now electronic configuration is asymmetric in nature. That is what we call it. We call it as axial symmetry, and it will show now quadruple splitting. Okay. So basically, we can say that if that is there is electron field gradient absent, that means there is no loss of electron. That means no disturbance of electron field. Then it is called quadruple splitting will be absent. Whereas if there is disturbance or electron field gradient is present, then there is what it is called quadruple splitting will be present. Yes, sir. Yes. Quadruple splitting is symmetrical, oblate, prolate. What the difference? Can you describe? Sir. That means if all ligands are same, okay, that means in tetrahedral, or that means in octahedral molecule, if the ligands are same basically, then it will call actually spherically symmetrical. Okay, so spherically symmetrical. Whereas if the ligands are different, then it is called that is called basically axially symmetrical. Yes, sir. That is called axially symmetrical. Is it okay, sir? Awesome. Yes. What is the quadruple splitting for 57 iron and 119 tin SN? The value of what the selection rule? Sir, 57 iron. 119 SN. Quadruple splitting for this and selection rule also. Sir. इसका delta mj equal to plus minus 1 and 0 sir. Yes. Delta mj is equal to plus minus 1 and 0 होगा sir. Yes. Suppose yes, what we can say. Selection rule is right, but the splitting explain. Sir. Okay. Let me explain. Okay. So in iron it has plus minus half, and it has plus minus 3 by 2. Okay, plus minus half, and it has plus minus 3 by 2. So in plus minus half, what we can get? We can get in presence of magnetic field there is minus half. Okay, suppose I am taking plus half, and in 3 by 2 there will be 4 line will be there. Suppose I am taking like that, plus 3 by 2 plus half, मतलब ये ऊपर जाएगा, minus half plus half, minus half 1 minute 3 by 2 1 by 2 minus half minus 3 by 2. Okay,
So what we can, here the selection will be delta Mz 0 and plus minus 1. Okay. So what we can see in presence of electron field gradient, मतलब प्लस हाफ से प्लस हाफ भी जा सकता है. So प्लस हाफ से 1 बनने के लिए माइनस हाफ तक भी जा सकते हैं. ओके. एंड देन 3/2 से भी आ सकता है. देन माइनस हाफ से माइनस हाफ भी जा सकता है. तो माइनस हाफ से प्लस हाफ भी जा सकता है. एंड माइनस हाफ से 3/2 भी जा सकता है. -3/2. So there will be 6 line will be observed. In sir, quadruple splitting, there will be 6 line. When we that means what it is called, when we apply magnetic field, then 6 line will be observed. Whereas in only electron field gradient, when electron field gradient is absent, that means in presence of electron field gradient, that is it should be plus minus half, and it is plus minus 3/2. Okay. Then plus half से plus half and minus 3/2 minus half से minus half जाएगा. No sir, 1 minute sir. ये तो मतलब in presence of negative field मैंने दिखा दिया. 1 minute sir. Plus 3/2. This one will be plus minus 3/2. This one will be plus minus half, and this one will be plus minus half. तो यहाँ से एक जाएगा, यहाँ से एक जाएगा. That means 2 line. 2 line. That means when electron field gradient not equal to 0, 2 line will be observed. Is it correct, sir? When electron field gradient not equal to 0, there is 2 line. That means quadruple splitting will be observed. Okay, sir. Ground state is half and excited state will be minus half, 3/2. Then in presence of electron field, 3/2 is again splitted to plus minus half and plus minus 3/2. Okay. Then whereas the selection rule is delta Mj 0 and plus minus 1. Okay, 0 था and plus minus 1 था. So plus minus half से plus minus half भी जा सकता है, plus minus half से 3/2 भी जा सकते हैं. So therefore 2 line will be observed, sir. Yes, sir. 2 line will be observed. Sir. Yes. What the magnetic field effect on 57 iron and 119 tin? Yes, sir. In sir magnetic field effect, there is I have already discussed that time. That means in presence of magnetic field, there is 6 line will be observed for iron, or 6 line. That means it again that spin will split again, and it will get 6 line for iron. 6 line for iron, sir. Yes. Awesome. Yes, good. Complete. Awesome. Awesome. Any new application of MOSBR? New application. That means we can. I have already told that first in first, sir. That means electron density का change in electron density in nucleus. Yes, any once again new application. Any 5-10 points. Sir. That means this is the basic sense. It is sensitive to detect the change in electron density around the nucleus. Okay. Or sir, it can which in those complex where oxidation state or suppose like coordination number are unclear,
we can confirm by Mosbaer spectroscopy also. We can determine the site of symmetry also, and we can identify the structure without the help of single that means we single crystal नहीं बनाने से भी हो जाता है. And sir, in presence of those substance we can which are in dissolved state, we dissolve, that means dissolved molecule or something like complex can be determined in frozen state. That means फ्री स्टेट में भी हम लोग मतलब उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं सर. यस सर, हो गया सर दिस वन. हाँ सर. यस, सोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लू शिफ्ट. हाँ सर, सोडियम मतलब प्रूसियन ब्लू प्रूसियम देता है ब्लू एक, या टर्न प्रूसियन ब्लू, और सर एक पोटासियम एक था सर टर्न ब्लू देता है एक सर. हाँ सर, प्रूसियन ब्लू मतलब के फॉर एफिशिएंसी पैराडॉक्सिन. प्रूसियन. हाँ सर. पैराडॉक्सिन प्रोटीन. सर सर इसका मतलब पता नहीं मुझे, आप एक बार बोल स्टडी दीजिएगा. ऑफ पैराडॉक्सिन के लिए भी यूज किया जाता है एपीएस. वन इफेक्ट मिनट ऑफ सर. पाई बॉन्डिंग इन एपीसीएल का ऑल 5 एक्स मॉलिक्यूल. स्टडी ऑफ थर्मल स्पिन क्रॉसओवर. वन मिनट सर. सर स्पिन क्रॉसओवर ना. स्टडी ऑफ थर्मल स्पिन क्रॉसओवर. मेनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इंटरमीडिएट लिगेंड्स. स्ट्रेंथ. थर्मल ट्रांजिशंस. ओके. हाँ सर, यहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना सर दिस वन. यस, हाँ सर, मॉस्फियर हो गए आपके. मॉस्बियर और सर ईपीआर हो गया. और सर मतलब बाकी का अगर मैं मतलब मेरा क्या हुआ है, फिजिकल का थोड़ा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो थोड़ा वीक है, मतलब जो बेसिक थिंग्स मतलब सिलेक्शन रूल वगैरह न्यूमेरिकल हो जाता था, थोड़ा वीक है. उसके लिए क्या करूं मैं? बाकी तो सारा कुछ हो गया मेरा. न्यूमेरिकल का कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व जरूर कराएंगे वहाँ पे. वहाँ पे थ्योरी का होगा, तो थ्योरी डिफाइन हाँ करना. सर, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब वीक है. फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए बस. न्यूमेरिकल कोई फॉर्मूला सॉल्व आना नहीं चाहिए. कराएंगे, फॉर्मूले आने चाहिए. अब नहीं 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 थर्मोडायनामिक्स नहीं, है. दैट आई एम नॉट टेलिंग सर. मतलब न्यूमेरिकल मतलब उस टाइम कर पाता था, अभी मतलब थ्योरी थोड़ा वीक हो गया इसलिए. कोई और प्रॉब्लम मतलब नहीं मैं. है वो. न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे वहाँ, ओनली डेरिवेशन होगा. डेरिवेशन आना चाहिए. ओके सर. सर हम लोग मतलब फुल मार्क कब से देंगे? जब फिनिश हो जाए तभी से स्टार्ट हो जाएगा. तो तब अभी तो कौन बहुत कौन से देर होगा टॉपिक रह सर. गए आपके? बाकी तो इतना टॉपिक नहीं है अभी. अभी तो क्वांटम तो मेरा हो गया, कल ले सकते हैं सर आप क्वांटम. यस, ठीक है, कल क्वांटम क्वांटम हो. लेते हैं. हाँ सर, क्वांटम ले लेते हैं. और सर और क्या बाकी था? और तो बाकी सर थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो सॉल्यूशन वगैरह है वो भी ले सकते हैं कल सर अपने. आप मतलब क्वांटा सॉल्यूशन, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये वगैरह हमने तो बहुत सारा चैप्टर कर लिया अभी. ऑलमोस्ट हो ही गया सर. होगा हाँ ही. ना अब सर. सॉल्यूशन कल हाँ. डिस्कस कर लेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कर लेंगे, क्वांटम कर लेंगे, बेसिक चीजें. ओके सर. सर ठीक है. क्वांटम क्वांटम मतलब हाँ सर. सर क्वांटम मतलब हम मैंने क्या किया, जो जो बेसिक थिंग्स है वही पढ़ा मैंने अच्छे से. और बाकी मतलब आइजन वैल्यू व्हाई ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस रीड ऑन थिंग. वो तो बाकी टॉपिक आता इतना है मतलब. तभी क्वेश्चंस अपने ऑटोमेटिकली बनने लगते हैं. कोई भी टॉपिक आता है तो उसको हम स्टडी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इंटर क्रॉस क्वेश्चन होने लगते हैं, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं ना. हाँ सर. हाँ सर, तो इसलिए मतलब. और कुछ सर अब से अब मतलब जो और करना चाहिए मुझे. प्रैक्टिस कीजिए बस, आप इतना ही है प्रैक्टिस, बस उसको थोड़ा और कोई एप्लीकेशन पे वर्क कीजिए जब ये एप्लीकेशन मिल जाते हैं. बाकी मैं भेजता रहूंगा क्वेश्चन जो भी मुझे मिलते रहते हैं, क्योंकि हाँ मॉक सर. चलते रहते हैं ना. मुझे जो टाइम मिलता है तब मैं आपको भेज देता हूँ. और अभी देखो हाँ सुबह सर. से, 9-3 बजे से मॉक चल रहे हैं, और गैप 3 से बीच में वो 10 मिनट का होता है, इसीलिए मैंने 10 मिनट का गैप का किया हुआ है. स्लॉट बनाया हुआ है जिससे कि आपको भी रेस्ट मिल हाँ जाए आप. और मुझे भी रेस्ट मिल हाँ. जाए. हाँ सर. हाँ इसलिए. तो नहीं तो कंटिन्यू सर नहीं. करेंगे तो फिर माइंड को भी तो वो होगा ना. हाँ सर, आपको भी मतलब हेडेक हो जाएगा ये, लेकिन आप सर कंटिन्यू कर रहे हैं ना इसलिए. और मतलब कंटिन्यू. सर मैं सर परसों घर जाऊंगा. ओके सर. तो मतलब परसों से हम लोग मतलब दिन में ही दे सकते थे, दिन में भी और इवनिंग में भी, मतलब 3 बजे से या 6 बजे से कितने ऐसे बजे भी दे जाओगे सकते आप? हैं.
हाँ सर, मतलब 6 को जाऊंगा, सो 6 को तो मतलब रात को ही दूंगा दूंगा और बाकी मतलब 7 से मतलब इवनिंग टाइम भी दे सकते हैं सर। रात को मतलब मदर मतलब खाना बना के मतलब रात में ले शी लेंगे, विल रात में बी। अपना टाइम सुटेबल है। घर पे जो लोग आप, टाइम घर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? घर पहुंचने में यहाँ से मतलब 1.5 आवर। तो कोई नहीं है, नाइट में ले लेंगे हम, हाँ नाइट मॉर्निंग में में जाएंगे ना मतलब आप। हाँ सर, 7 से मतलब हम मतलब इवनिंग में भी दे सकते हैं, इवनिंग में देगा तो अच्छा होता थोड़ा। कोई नहीं कि इवनिंग में मैं आपको टाइम बता दूंगा, क्योंकि सबके हाँ स्लॉट सर। बने हुए हैं ना, सबका औरों का हाँ टाइम सर, बना हुआ है ना, बात ये है ना, अब उससे वो दस तो दस नहीं बजे कर से भी सकता। हो जाएगा, कुछ नहीं, 10 बजे से भी हो जाएगा, कुछ नहीं। और कोई सर, नहीं, मैं ये बोर्ड लेके जाऊँ या नहीं लेने से भी होगा? बोर्ड कोई लेके नहीं, जाऊंगा ओरल क्या? कर लेंगे डिस्कस, बोर्ड मत लेके जाओ, परेशान होगे। नहीं नहीं, नहीं सर, मतलब मतलब एक सोता वाला भी है ये 1 मिनट, 1 मिनट वैसा है, आए। फोल्ड वाला है, कोई फोल्ड वाला है? नहीं 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 नहीं, ये भी एक है सर, ये भी एक है छोटा वाला ये। यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है मैंने। ये वो तो छोटा वाला आप है सर। नहीं, जरूरी है, क्योंकि इसलिए हाँ लिखा है सर। ना आपने, वो सही है, प्रैक्टिस के लिए है हाँ ना। हाँ सर, ये ये मतलब आप चॉक पेंसिल से देते हैं। टीचिंग करते हैं ना, तो आप अपना शेड्यूल, आपने भी कुछ बनाया हुआ है अपना। हाँ सर, मतलब ये यहाँ पे मतलब कुछ कुछ लिखा हुआ है मेरा, इसलिए सर। बाकी तो सर ठीक है। और सर मतलब कोई क्या नहीं, आप बोलूँ ले मैं? जाने में प्रॉब्लम होगी, वैसे हम ओरल डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ओके, मैं ले जाऊंगा सर, मतलब गाड़ी बुक करके जाऊंगा ना, यहाँ से थोड़ा बुक भी लेके जाना होगा मुझे वहाँ पे। अच्छा, तो गाड़ी बुक करके ले जाओगे तो फिर क्या दिक्कत है? मतलब एक 4 व्हीलर लेके जाऊंगा, तो उसमें मतलब हो जाएगा सर। छोटा वाला भी ले सकता हूँ या ये वाला भी ले फिर तो सकता कोई हूँ? दिक्कत नहीं, कोई फिर ले जा प्रेफर। सकते हो, फिर ले जाओ कोई। तो आप फोर व्हीलर में लेके जाओगे, आओगे लेके, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो उसको ले जाओ, फिर वहां पे क्या है, अपने रूम में टांग लेना, फिर तो सही है। हाँ, वैसे रूम अगर में भी जगह 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 है, मतलब जगह है अच्छे से। ये मतलब फोर पहले तो व्हीलर में रूम में तो ही चला था। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, तो ठीक है। मतलब घर में एक है, लेकिन वो मतलब इरेज करने में दिक्कत होता है, इसलिए मतलब अभी नहीं लिया। मतलब वो वहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ मैं। हाँ सर, ठीक है। और ठीक सर है, मतलब फिर कुछ हम इम्प्रूव कर। हाँ इम्प्रूव सर। कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, जितने ज्यादा एप्लीकेशन ड्रॉबैक लिमिटेशन जितने ज्यादा मिल सके हाँ सर। उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आपका एक्सप्लेनेशन है मेन, एप्लीकेशन मेन पर्पज होता है, एप्लीकेशन बेस सबसे ज्यादा एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन किए जाते हैं। और ड्रॉबैक लिमिटेशन, सिंपल वे, डेफिनेशन, सिलेक्शन रूल, ये सारी चीजें तो मिल जाती हैं। एप्लीकेशन क्या है टॉपिक का, वो मेन ज्यादा रहता हाँ सर। ओके। है। ठीक है, फिर हम कल ओके। मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू, गुड ओके नाइट। सर। सर, ओके। हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस सर। हैप्पी टीचर्स डे। यस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ सर, थैंक यू। ओके सर।